Hello students, very warm welcome back in this channel. Now the next topic, identity operator. It's so in my previous lecture where I taught about arithmetic, comparison, logical, assignment, bitwise and membership operator also. Okay. So students, if you are new for this channel and really curious to know about these operator, then you may visit my playlist. Now let us start and try to understand about identity operator in Python. Yes, identity operator is what? Identity operator used to compare if two objects are actually the same object with the same memory location. Okay, this used to compare if two objects, notice over that, compare if two objects are actually the same object. Okay, after using programming, I would try to make you understand what is the differences between object and value. Okay, so here I listed a two operator. The first one is operator and the second one is not operator. Okay, is operator return true if both variable are the same object. Both variables are the same object. And is not operator return true if both variables are not the same object. कहने का मतलब है, here the example x is y. This will provide true. But when you assign x equal to, suppose you have a list 1, 2, 3, okay, and y equal to x. So in this case, if you try to use is operator like print x is y, okay, so in this case, this provide your true result, okay. But again, now the next, if you try to assign the another value for y, yeah, if you try to assign same value like 1, 2, 3 like this, okay. And now when you use this is operator, x is y, in this case this will provide your false result. ये आपको false output provide करेगा. Why? Because this compare two objects are actually the same object. Same object भी होना चाहिए with the same memory location. जो भी एलिमेंट को हम स्टोर कर रहे हैं वो हमारा सेम मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करना चाहिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम का. Okay, so in this case simple, if you use equal to operator, okay, अगर आप प्रिंट के साथ x इक्वल टू y का यूज करते हो, सो इन दिस केस दिस प्रोवाइड ट्रू. ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. वाई? बिकॉज दिस कंपेयर योर वैल्यू, योर असाइंड वैल्यू, ये कंपेयर कर रहा है आपके असाइन किए हुए वैल्यू को. ओके, सो लाइक 1 1 2 2 3 3 लाइक दिस. सो इन दिस केस दिस प्रोवाइड योर ट्रू. बट एज सुन एज यू यूज इज ऑपरेटर, लेकिन आप जैसे ही इज ऑपरेटर का यूज करते हो कि क्या x जो है वो इक्वल टू y है, x इज y, x y है, सो इन दिस केस दिस प्रोवाइड योर फॉल्स रिजल्ट. व्हेनेवर योर वैल्यू इज सेम, जबकि आपका जो वैल्यू है वो सेम असाइन किया हुआ है. बट एज सुन एज यू असाइन वैल्यू फॉर एनी वेरिएबल, so in that case definitely this will reserve any storage location in your computer system, है ना. ये आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं मेमोरी तो रिजर्व करेगा ही करेगा. सो आइडेंटिटी ऑपरेटर का कहना है कि इट यूज टू कंपेयर इफ टू ऑब्जेक्ट आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट. अगर दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे एक्चुअली सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए विथ द सेम मेमोरी लोकेशन. ओके, जैसे इज नॉट की अगर बात आती है, सो सिंपल, इफ यू असाइन लाइक x इक्वल टू 1 2 3 एंड y इक्वल टू x, okay, so as soon as you use print x is y, so in this case this provides, sorry, is not y. अगर आप
ऑपरेटर यूज करते हो इज नॉट का कि x is not y, so in that case this provide false result. Okay, now let us start and try to understand after using program. So simple, here I assign any list value like x equal to any list like 10, 20, 30 and 40. Clear? Now the next, x equal to uh, y equal to x. Okay, now print. For the new line, simply you need to press enter and x is y. Now save this. Now execute this. So true, x is y. Okay, but as soon as you assign same value, आप जैसे ही सेम वैल्यू असाइन करते हो विथ फॉर y वेरिएबल and 30, 30 and 40. Now control is, now execute this. So in this case, this provide your false result. Okay, but when you use equal to sign, अब अगर आप equal to sign का use करते हो, now execute this. So in this case, this provide your true result. Why? Because in this case, this check your value. ये आपके value को check करता है. But इज ऑपरेटर आपका क्या कर रहा है? इज ऑपरेटर आपके ऑब्जेक्ट और एक्चुअल मेमोरी लोकेशन को चेक कर रहा है. क्लियर? कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए और सेम मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करना चाहिए. ओके, सो कंट्रोल इज, नाउ एग्जीक्यूट. सो इन दिस केस दिस प्रोवाइड योर false result. Okay, similarly, next operator is what? Is not operator. So is not operator, simple, when I use is not. Okay, x is not y. So in this case, control is, now execute this. So this provide true because x is not y. Because x is not y. But print x is not equal to y. In this case, this will check the value that has assigned for this variable. ये value check करेगा जो कि हम assign किए हुए हैं इस variables के लिए. So in this case, now execute this. So this provide false. ये क्या कर रहा है? False result provide कर रहा है because इसके अनुसार क्या है? तो x और y जो है वो हमारा same है because this assign the same value for this variable. क्योंकि ये assign किए हुए हैं same value हमारे इस particular variables के लिए. Okay, so thank you for watching this. Simple, if here you assign again x y equal to x. Okay, now control is, so in this case, now notice over that the result. Now execute this. So in the first case, x is not equal to, x is not y. So नहीं, x is y. Okay, x हमारा y है. So this provide your false and not equal to also this provide your false result. Okay, because x equal to y equal to x, so x equal to y. Okay, so thank you for watching this. If you realize the video is really helpful, then please subscribe my channel and don't forget to hit the bell button to update it with my content. So in this lecture I till now I have completed all the operator. हमने सारे ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया. So if you realize the video is really helpful, then please subscribe my channel.